Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, 2 days of exam of IBPS RRB PO is now over. And in this video, we will discuss various aspects of all the 8 shifts. Now, when I was reading the comments, this time there are some comments which is unique. One of the subscribers said, 2 days of horror is now over. Really, the exam level of this time is comparatively tough. Only a few can call it moderate, but I will call it tough. Because what majority of candidates feel is the real feel of any exam. I am tracking these exams for last 11 years since 2012. First exam I tracked under new pattern was 2012 exam soon after I left the bank after serving 31 years, and I was closely associated with such type of examinations during my tenure as Chief Manager in bank. Even I attended many trainings where it is taught how questions are framed. So I have first-hand feel how these days questions are framed, what is their level, what is their expectation, and why such examinations are made tougher or easier to have a clear distinction among us the candidates. Whenever exam is tough, it helps the serious candidates because the candidates, those believe in accuracy and those are conceptually clear in their thoughts, although they score low, but they are able to clear such examinations. And this year is one such event. In all the 8 shifts put together, if we look at the attempts of the candidates, you will find very rare candidates those could attempt above 60. Usually every year you will find lot of candidates those have attempted more than 60. If you attempt around 60 or less, then out of 80, then naturally this exam should be treated as a tougher examination. Even the candidates, those who attempt 50 plus, are not in large number. But most of the candidates have attempted less than 50. This is the uniqueness of this year exam. And this level of attempt has shattered dream of many because they are trying to compare this year performance with past year performance. But one thing they are forgetting, that this year performance cannot be compared with preceding year performance, even last 4 to 5 years performance. The candidates, those are appearing this examination for last 4-5 years, they can vouch this, that this is the toughest exam which they have seen in last few years. So what can be the hint for cutoff? These days it is very difficult to predict cutoff. These days I think cutoff prediction is just a guesswork. Some people try it and we stopped it for the last 2 years. Before 2 years, I was also used to give a cutoff, and normally it was dot at the point, but somehow I felt that we are not doing any justice by predicting the cutoff, because cutoff theory is not available. There is no scientific model. And if we are making guesswork and we are telling a figure, sometime it may come out to be true, sometime it may not come out to be true.
So we are taking a risk in predicting a cutoff. So the better recourse is we should not predict the cutoff. Rather, we should try to have a overall scenario and advise the candidate what is in their best benefit. My suggestion is, even if your attempts are lower, you have a chance to move to next phase, because most candidates this year performed very less number of, they are able to attempt very less number of questions, and it will definitely have an impact on overall cutoff. We can't predict it, but I feel if your attempts are low, still you are in race. So don't have let down feeling, don't get upset, and don't allow time to lapse. My advice will be, irrespective of your attempt, you should prepare for mains, because your mains is just 1 month away and the result may come after 15 to 20 days. So you may not have time after result to prepare for mains, because it always happens, some people they feel they will not clear the examination, but suddenly result comes and they clear the exam and there is no time left. So the better way is you continue to prepare for mains. We are already posting daily timetable video on this channel. Follow those timetables and prepare for mains. Now two events can happen. Either you will clear the pre, or you may not be able to clear the pre. If you are able to clear the pre, this preparation will help you in mains. If you fail to clear the pre, the same preparation will help you in the 5 future exams of major exams for banking. So your study will not go waste. The candidates, those who have performed less in this examination, they can balance their study by devoting some time to pre-examination of the forthcoming exams and some time to the main examination of the forthcoming examination. For that also I have placed a video yesterday, how you should balance your time for pre-preparation as well as main preparation. So my view is very simple. It is very difficult to predict cutoff. So the safe recourse is prepare for mains irrespective of your low attempts. I am hopeful that this year many low attempt candidates will get a chance to sit in mains. Rest time will tell, because we can only estimate. We can only remain positive. Rest is not in our hands, because by any type of data that we have collected, yesterday around more than 3,000 to 4,000 people reported their attempts. Today also in the same range, candidates have reported their attempts. So we are having data of roughly 7,000 to 8,000 people. But on the basis of 7,000, 8,000 people, we can't estimate a cutoff where lakhs of candidates have appeared for the examination. So as there is no scientific model for cutoff, I feel you should not be let down, or you should not feel sorry for your low attempts. Rather, rebuild your energies, rebuild your capabilities, rebuild your emotions, and aspire for main examination as well as forthcoming pre-examination. This is my advice, and my last 11-year experience says these swings happen every year. No relation with last year cutoff. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. 2 दिन एग्ज़ाम के ख़त्म हो गए, IBPS RRB PO के, और एक कमेंट में कहा गया कि सर बहुत ही डराने वाले दिन रहे हैं ये, हॉरिफाइंग दिन रहे हैं ये. वास्तव में ऐसी फीलिंग काफ़ी लोगों को हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों ने इतना टफ एग्ज़ाम आएगा ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया था.
एग्ज़ाम वास्तव में टफ है। कुछ लोग कहते हैं मॉडरेट है, अब क्यों कहते हैं मैं नहीं जानता, पर अगर हम अधिकांश लोगों के व्यूज़ पढ़ें तो वो टफ की तरफ ही है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो 60 से ऊपर अटैम्प्ट कर पाए हैं, और 50 से ऊपर अटैम्प्ट करने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिस एग्ज़ाम में 60 या 50 अटैम्प्ट्स हैं कुछ लोगों के और अधिकांश लोगों के 50 से भी नीचे अटैम्प्ट हैं, उसको हम मॉडरेट या आसान एग्ज़ाम नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ कैंडिडेट के लिए ये आसान रहा हो, पर अधिकांश लोगों के लिए नहीं रहा। 2012 से मैं इन एग्ज़ाम्स को मॉनिटर कर रहा हूँ। 11 वर्ष हो गए मुझे इस न्यू स्टाइल ऑफ एग्ज़ाम्स को मॉनिटर करते हुए, और जब बैंक में मैं चीफ मैनेजर था तो मुझे मौका मिला इस तरह के एग्ज़ाम के साथ क्लोजली एसोसिएट होने का, और जो पेपर सेटिंग होती है उसकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें भी मुझे मौके मिले पार्टिसिपेट करने के, क्योंकि बहुत सारे प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसको आजकल हम पीईटी बोलते हैं, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, अर्लियर डेज में इसको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बोला जाता था, वो मैंने बैंक के बिहाफ पे कंडक्ट किए हुए हैं। तो हमें आइडिया होता था कि लेवल क्या है एग्ज़ाम का, हमें आइडिया होता था कि किस डायरेक्शन में एग्ज़ाम का जो पेपर सेटर है पेपर को सेट करेगा, उसके पीछे एक दृष्टिकोण होता है, और वही दृष्टिकोण इस साल भी नज़र आ रहा है। क्योंकि जो टफ पेपर होते हैं इसमें जहाँ एक तरफ निराशा आती है, वहाँ एक तरफ ये फ़ायदा भी होता है, जिन कैंडिडेट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या जो एक्यूरेट है वो लो अटैम्प्ट के बावजूद भी नेक्स्ट फेज़ में इंटर कर जाते हैं, और इसमें वो कैंडिडेट प्लक हो जाते हैं जिनके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत कम क्वेश्चन कर पाते हैं। पर जो कम कर पा रहे हैं, मीन्स बहुत कम नहीं है पर कम कर पा रहे हैं, वो नॉर्मली वो कैंडिडेट होते हैं जिनके कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं, और कम नंबर लेके भी वो कट ऑफ को पार करने में कामयाब होते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल का एग्ज़ाम इसी ध्यान में रखा गया है कि जिन भी कैंडिडेट के कंसेप्ट क्लियर हैं या जिन्होंने एक्यूरेसी पे अच्छा काम किया है, वो कम अटैम्प्ट के बावजूद भी शायद निकल जाए। मैं कोई कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ, और ना मैं कोई कट ऑफ प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले तक हम करते थे और बिल्कुल सटीक निकलता था। पर 2 साल पहले मैंने ये पाया कि ये जो हम अनुमान लगा रहे हैं ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ये सच भी निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है। जब किसी चीज़ का कोई साइंटिफिक मॉडल ही नहीं है, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड ही नहीं है, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह का अंदाज़ा कैंडिडेट के लिए घातक भी सिद्ध होता है। तो इसलिए उसको अंदाज़ा ना लगा के यदि हम हर एग्ज़ाम्स के सारे दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करें और एक हॉलिस्टिक व्यू कैंडिडेट के सामने रखें, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। इसीलिए पिछले 2 वर्षों से हम अपने व्यूज़ दे रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, पर कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कट ऑफ क्या होगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछले सालों के कट ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। हम ये कहें कि उससे इतना कम होगा, इतना ज़्यादा होगा, कोई रिलेशन ही नहीं होगा उससे। बहुत ही यूनिक कट ऑफ इस बार आपका आएगा, और इसलिए जिन लोगों के अटैम्प्ट कम हैं उनको एक मौका मिलेगा मेंस में बैठने का। अब कितने कम नंबर तक मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, कितने अधिक नंबर तक मिलेगा ये भी कहना मुश्किल है। पर एक चीज़ बड़ी तय है कि मुझे सेफ रिकॉर्ड्स क्या है। अब मैंने प्री दे दिया और अल्टीमेटली मैं तैयारी कर रहा हूँ नौकरी पाने की। अगर मैं मेन की तैयारी शुरू कर दूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि होगा क्या, 2 में से एक चीज़ होगी, या तो मैं पेपर पास कर लूँगा या मैं पेपर पास नहीं करूँगा, तीसरा कोई इवेंट नहीं होगा इसके अंदर। अगर मैंने पेपर पास कर लिया तो मेरी ये मेन की तैयारी मुझे मेन पास करा देगी, और मेरा पेपर नहीं पास हुआ तो ये मेरी मेन की तैयारी जो आने वाले 5 एग्ज़ाम हैं उनके मेन के लिए मेरी फाउंडेशन को रख देंगे। इसलिए इस एग्ज़ाम की यदि मैं मेन की तैयारी अभी से शुरू करता हूँ, मेरे जितने मर्जी अटैम्प्ट हैं, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
साथ ही साथ जो आने वाले 5 एग्ज़ाम हैं उनकी अगर मैं प्री की भी तैयारी करता हूँ तो वो भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मेन की तैयारी और प्री की तैयारी में कैसे बैलेंस बनाए, इस पे भी मैंने एक वीडियो कल आपको दी है, उसको देखिए और आगे की दिशा तय करिए। और जो मन में ये निराशा आई है काफ़ी कैंडिडेट्स के, या मन में जो सोच आ रही है, उससे बाहर निकलें। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग परेशान हैं, निराश हैं, क्योंकि उनके आशाएं बहुत थी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अगर आसान पेपर आता तो उनकी आशा भी शायद पूर्ण होती, बहुत अच्छे अटैम्प्ट करके आते। अब उनके अटैम्प्ट कम है इसलिए निराश हैं। मगर अटैम्प्ट कम है, औरों के भी अटैम्प्ट कम है, आपके भी कम है, तो आप रेस से बाहर नहीं हुए। कंपटीशन तो आपस में है ना। यदि मेरे कम है और दूसरे के भी कम है तो मैं कोई कंपटीशन से कैसे बाहर हो गया। जिनके बहुत अधिक है वो तो विरले हैं, वो तो निकल ही गए रेस में आगे। पर जिनके अटैम्प्ट कम है वो अधिकांश है। अभी मैं अधिकांश के साथ खड़ा हूँ। इनमें से किसको मौका मिल जाएगा मेन में जाने का, ये मैं नहीं जान सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? जब आगे धुंधलापन है तो मेरे लिए क्या है, मैं अपना कर्म करता रहूं, मैं मेन की तैयारी करता रहूं। हो सकता है मुझे मौका मिले, हो सकता है मुझे मौका ना मिले। मौका मिलेगा तो ये तैयारी मेरे अभी काम आ जाएगी, मौका नहीं मिलेगा तो जो अगले एग्ज़ाम का मेन है उसमें मेरी ये तैयारी काम आ जाएगी। इस पॉजिटिव नोट के साथ अपने मन को आप समझाइए और आगे बढ़िए। मैं आपके साथ हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।